Let us start the mole concept now. As we know, atoms and molecules are extremely small particles, very small particles. So when these small particles combine, they combine in a very large number. Their numbers are very large. So to handle such huge numbers, we need a large similar unit of the similar magnitude. Large unit of similar magnitude. अब मोल कंसेप्ट को समझने से पहले, मोल इज़ एक्चुअली जैसे वी से डजन, 1 dozen is equal to 12 items or 12 units. Similarly, if you say gross, 1 gross is equal to 144 items. Similarly, when we say 1 mole, that is 6.022 into 10 raised to power 23 particles. Now the question comes, from where do we get this value? So it is written, let's see here. 1 mole is the amount of a substance that contain as many as particle or entities as there are the atoms in exactly 12 grams of carbon 12 isotope. मतलब कार्बन 12 आइसोटोप का इफ़ यू टेक 12 ग्राम्स, तो उसमें जितने भी पार्टिकल्स आते हैं उनका जो काउंट है, दैट इज़ कॉल्ड 1 मोल. हाउ इट हैज़ बीन कैलकुलेटेड, देखो. In order to determine this number precisely, the mass of carbon 12 atom was determined by mass spectrometer, and it was found to be 1.99 something into 10 raised to power 23 grams. And as we know that the mass of 1 mole of carbon atom has 12 grams. This is the mass of 1 atom of carbon, and this is the mass of 1 mole atoms of carbon. So to take out the number of particles in it, let us divide the mass of the 1 mole of carbon atoms divided by mass of 1 mole of 1 carbon atom, only 1 carbon atom. So there we get 6.0022137 into 10 raised to power 23. This is such a huge number where it contain अगर आप कंपैरिजन की बात करते हैं तो इफ़ सच अ बिग नंबर ऑफ मार्बल्स वी आर यूजिंग, मान लो यू आर हैविंग मार्बल्स ऑफ दिस मेनी numbers and you are trying to cover the earth surface, you can cover the earth surface with 5 kilometer thickness, you know. So such a huge number which is capable of covering the earth surface in number of terms. So writing, actually this is this value, this much, and writing, as you know, is not so easy to write such a big value, so we conveniently express it in the terms of this, and this is, I have taught you already, this is scientific notation. So when you say, very important part is what is particles. 1 mole of what, actually when you are saying 1 mole का मतलब ये. अब ये पार्टिकल्स आप किसके बारे में बात कर रहे हो, किस तरह की एंटाइटी के बारे में बात कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है. लाइक इट कैन बी एटम्स, इट कैन बी मॉलिक्यूल्स, इट कैन बी आयंस. लाइक इफ़ यू से 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, it contains 6.022 into 10 raised to power 23 atoms. But if you say 1 mole of hydrogen molecules, now it is H2, that is equal to 6.022 into 10 raised to power 23 molecules. ठीक है. अब ये देखो, 1 हाइड्रोजन molecule contain 2 atoms of hydrogen. So 1 mole of hydrogen molecule contain itna molecules, and that contain 2 into 6.022 into 10 raised to power 23 atoms. क्योंकि एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम है, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होंगे, उसके लिए हमको इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना होगा. Similarly, if you take example of oxygen, so 1 molecule of O2, that is equal to 2 atoms of O2, oxygen, sorry,
So this contains 6.022 into 10 raised to power 23 molecules of O2. इसमें हमारे कितने एटम्स होंगे? 6.022 into 10 raised to power 23 multiplied by 2 atoms of ऑक्सीजन. और अगर मैं लिखूँ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, वन मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन contains 6.022 into 10 raised to power 23 atoms of oxygen. तो इसको समझो, अगर मैं मॉलिक्यूल के टर्म में बोलती हूँ और अगर उसको मुझे एटम्स में कन्वर्ट करना है तो आई हैव टू मल्टीप्लाई द एटॉमिसिटी. इफ़ यू आर सेइंग इट इन टर्म्स ऑफ एटम्स ओनली देन इट विल बी इक्वल टू दैट नंबर ऑफ एटम्स. सो सेम वे 1 mole of water will contain how many molecules of water? Yes, 6.022 into 10 raised to power 23 molecules of water. So I hope इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही है. Then another concept is molar mass. Molar mass. You have learnt about molecular mass. This is molar mass. Molar mass means the mass of 1 mole of a substance. Substance means any molecule, any atom, anything like that. So, for understanding this, you see, 1 atom of carbon. 1 atom of carbon has 12 U mass. 1 mole atoms of carbon has 12 gram mass. Unit is different. अब देखो, यहाँ पे you are talking about 1 atom, here you are talking about 1 mole atom. 1 mole atom means you are talking about 6.022 into 10 raised to power 23 atoms of carbon. ये ध्यान रखो. Similarly, 1 molecule of water, इसका मास है 18 U. 1 mole molecule of H2O has the mass 18 gram. इसमें आप एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हो एंड हेयर यू आर टॉकिंग अबाउट 6.022 into 10 raised to power 23 molecules of water. तो जब आप एक ह्यूज क्वांटिटी लेके जाते हो तो आपका एक यूनिट भी बड़ी वैल्यू हो जाती है. द यूनिट ऑल्सो कम्स इन अ बिगर वैल्यू. सो बेसिकली व्हाट इज मोलर मास? Molar mass is the mass of 1 mole of a substance and it is represented in grams. ग्राम में रिप्रेजेंट होता है, जबकि जो एटॉमिक मास होता है वो यूनिफाइड मास में एक्सप्रेस होता है.